हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग वंस अगेन. नाउ आप लोगों को सभी को ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ 4 फैक्टर्स में डिवाइडेड है, 15 OLQs है, ये सब पता ही है. नाउ इसके अंदर फैक्टर 1 का रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बोलता है. पावर ऑफ एक्सप्रेशन, योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस. इसके अलावा फैक्टर 3 में स्पीड ऑफ डिसीजन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट OLQ जिसके बारे में मैं अभी बात करना चाहूँगा. स्पीड ऑफ डिसीजन. इनफैक्ट पूरे SSB में वन थिंग दैट ऑल ऑफ देम आर लुकिंग फॉर इज व्हाट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स. दिस इज अ स्किल, दिस कैन बी एक्वायर्ड, और इसके बिना आप किसी लीडरशिप पोजीशन में रह ही नहीं सकते. बिकॉज अगर लीडर डिसीजन ना ले पाए तो किस बात का लीडर है ना, और वो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में. तो स्पीड ऑफ डिसीजन का जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है: द एबिलिटी टू अराइव एट वर्कबल डिसीजन. किस टाइप का डिसीजन? वर्कबल डिसीजन एक्सपीडियसली, मतलब स्पीड के साथ. सो निर्णय तो लेना ही है, लेकिन निर्णय कैसे लेना? स्पीड के साथ. आपको पता है मिलिट्री ऑपरेशन में एवरीथिंग इज अंडर प्रेशर, सो यू नीड टू टेक डिसीजंस अंडर प्रेशर. इसका सेकंड पार्ट है, इट कंप्राइजेस ऑफ, स्पीड ऑफ डिसीजन कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स. वन इज जो भी आप डिसीजन लेते हो उसका अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिसीजन अराइव्ड एट, एंड इसका सेकंड पार्ट है द क्विकनेस इन अराइविंग एट द डिसीजन. तो इसको डेफिनेशन को पूरा का पूरा देखते हैं. Speed of decision is the ability to arrive at workable decision expeditiously. It comprises of appropriateness of the decision arrived at and the quickness in arriving at the decision. इसको समझने के लिए हम एक आज एग्जाम्पल लेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट का. आपको पता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में 4 टेस्ट होते हैं: TAT, WAT, SRT और SD. TAT is the basic test जिसका वेटेज 70% है, एंड WAT एंड SRT आर कंफर्मेटरी टेस्ट. उसके अलावा SD, these are the claimed value. आप क्या क्लेम करते हो, क्लेम्ड वैल्यू. और TAT, WAT, SRT में जो निकला उसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड वैल्यू. सो लास्ट में SD को चेक किया जाता है देखने के लिए कि आपने क्या बोला, कि आपके क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है, मम्मी पापा, टीचर, बॉस क्या बोलते हैं. और TAT, WAT, SRT प्रोडोमिनेटली TAT में क्या निकला, और इन दोनों के अंदर जुड़ाव. सो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज इन TAT, WAT, SRT अगर इसे स्टिमुलस मान लिया जाए तो आप जो लिखित में देते हो उसे रेस्पॉन्स बोला जाता है. एंड बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस, और उसी फ्रीडम ऑफ चॉइस को डिसीजन मेकिंग स्किल बोला जाता है. और आपको SSB जाने से पहले उसी फ्रीडम ऑफ चॉइस को ठीक करना है. तो आज के पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, हम ओनली 60 SRT को मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, वन आफ्टर द अदर एज इट इज प्रेजेंटेड देयर. वहाँ पे आपको बुकलेट दिया जाता है, बट यहाँ पे मैं आपको उसको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा. सो यू कैन मेक योर पेपर रेडी रखना. 1 से लेकर 60 तक मैं आपको ब्रीफ करूंगा. एंड लेट्स सी हाउ डू यू रिस्पॉन्ड एंड हाउ डू यू हैंडल दो सिचुएशंस दैट आर प्रेजेंटेड देयर. और उसको देख के हम देखेंगे कि आपका प्रेजेंट लेवल में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग कितना है. क्या आपके फैक्टर 1 का EI एंड RA निकल के आ रहा है? क्या आपका स्पीड ऑफ डिसीजन जो बोल रही है उसमें अप्रोप्रिएटनेस एंड क्विकनेस की बात कर रहे हैं, क्या वो आ रहा है या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उसे हम चेक करेंगे. तो SRT को टेस्ट लेने से पहले मैं बेसिकली ये बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल तो डेफिनेटली हम उसी में देख रहे हैं, बट स्पेसिफिकली SRT में हम क्या देख रहे हैं उसका एक मैं विवरण देता हूँ. आप उसके नोट्स भी बना सकते हो, सो दैट यू कीप दैट इन माइंड एंड देन यू कैन रेस्पॉन्ड. एनीवे आपको पता है SRT इज अ थर्ड टेस्ट एंड इट इज अ कॉन्शियस लेवल टेस्ट बिकॉज सिचुएशन आपको प्रेजेंट किया जाता है, अनलाइक इन द TAT जहाँ पे आपको पिक्चर दिया जाता है और आपको बोलते हैं कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन. मतलब इन केस ऑफ TAT अ पिक्चर इज शोन एंड यू हैव टू क्रिएट द सिचुएशन इनसाइड योर हेड, whereas in case of SRT it is presented from outside. So it is at the conscious level. उसके बारे में आगे बात करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट इज द एम ऑफ SRT. आप इसके नोट्स भी बना सकते हो और इसको दिमाग में रखते हुए ये टेस्ट देना, तो आई एम श्योर आपका टेस्ट का रिस्पॉन्स भी बेहतर हो जाएगा. सो द एम ऑफ SRT इज टू हेल्प आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर. इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर. तो आपने देखा ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर चेक कर रहा है. तो आप यहाँ पे किसी कोचिंग के नोट्स रट लिए वो सब नहीं चलेगा. यू हैव टू सॉल्व इट. सो द स्किल दैट यू डेवलप इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसके बारे में आगे बात करेंगे, इसको नोट कर लो. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स कैंडिडेट्स एबिलिटी टू एनालाइज एंड ग्रास्प द सिचुएशन.
मतलब ये कैंडिडेट किस तरह से सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है और उसको ग्रास्प कर रहा है, इसका अंदाजा भी इससे लगता है, जो कि फैक्टर 1 के एट्रीब्यूट्स है. नेक्स्ट इज it helps observe candidates action and movement. After all, in situation में he or she जो होता है वो और कोई नहीं होता, आप ही होते हो. तो we want to see, do you feel or do you think or do you act as if you are yourself in that situation, या इसको आप detachment के साथ लिख देते हो, है ना. Unless you are part of the problem or part of the situation, you cannot handle it. So it helps that. Next is, it helps to understand candidates' practical ability to solve situation. वो भी कैसे? Rationally, logical thinking, reasoning ability जो बोला जाता है, तर्क के साथ, है ना. Not irrationally, not preconceived, not stereotypical responses. So ability to solve situation rationally. तो आपको क्या डेवलप करना है? Rational thinking skills को डेवलप करना है ताकि ये दिखा पाओ. Next is, it helps to understand candidates' conflict resolution strategy, especially under stressful situation. Conflict resolution. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? जब मन में द्वंद्व आता है, उसको कैसे आप रिजॉल्व करते हो. क्या आप उसको अवॉइड करते हो, क्या इसको कन्फ्रंट करते हो, क्या विड्रॉ कर जाते हो, या उसको करेजियसली फेस करते हो. ये भी पता चलता है डिपेंडिंग अपॉन क्या टाइप का सिचुएशन है और किस टाइप का रिस्पॉन्स है, उसको देख के. नेक्स्ट इज, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सेज अंडर प्रेशर. अंडर प्रेशर आप अपने विचारों को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हो, सिचुएशन को किस प्रकार से समझते हो, किस तरह से हैंडल करते हो, एंड ये सब भी उसको पता करने में मदद मिलता है. नेक्स्ट इज, इसके इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया जाता है. इंटरप्रिटेशन ऑफ द एसएसबी अपना एसआरटी रेस्पॉन्सेस. सो लेट्स सी, ड्यू वेटेज इज गिवन टू नेचुरल रेस्पॉन्सेस. अनलाइक आपने रेडीमेड कोच रेस्पॉन्स लिख दिया, 60 ओरिजिनल एसआरटी लाके कहीं से लिख दिया, वो सब preconceived notion, stereotypical response में आ जाएगा. What is expected is you respond to them as you would do it in original या natural situations. So that's what we are looking for. Intensity of self involvement is observed. कि आपका किरदार उस सिचुएशन में किस तरह से इन्वॉल्व होता है और किस तरह से वो एक फीलिंग के लेवल पे, एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, इन्वॉल्वमेंट के लेवल पे उस सिचुएशन के साथ एंगेज हो रहा है, बजाय कि एक रेडीमेड कॉपीड रिस्पॉन्स लिख रहा है ना, ओरिजिनल रिस्पॉन्स जो बोला जाता है. नेक्स्ट इज, ब्लैंक रिस्पॉन्सेज इंडिकेट अवॉइडेंस ऑब्लिक एस्केप बिहेवियर. कभी कभी पुअर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के आपका कॉम्प्रिहेंशन इतना वीक है कि आपको सिचुएशन नहीं समझ में आया, तो वो भी पकड़ में आता है. अदरवाइज अवॉइडेंस, कि किस तरह के सिचुएशन को आप छोड़ते हो, किस टाइप के सिचुएशन से आप बचने की कोशिश करते हो, ये कंफर्मेशन भी हो जाता है टीएटी एंड डब्ल्यूएटी से. After all, this is a conformity test. Next is, his or her personality reflects his frame of reference. जिस तरह के responses आपके सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आते हैं, उसको समझ के आपके पर्सनालिटी प्रोफाइल को ड्रॉ करके ये देखा जाता है कि जीवन को देखने का नज़रिया आपका क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दृष्टिकोण. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. तो आपका जीवन को देखने का दृष्टिकोण को भी यहाँ से निकाला जा सकता है. नेक्स्ट इज, थ्रेट ऑब्लिक स्ट्रेस का परसेप्शन कैसा है, क्या लो है, हाई है, रियलिस्टिक है. मतलब रिस्क असेसमेंट, रिस्क को किस प्रकार असेस करते हो. क्या आप रिस्क को लो असेस करते हो या उसको मैग्नीफाई करके हाई बना देते हो, या रियलिस्टिकली उसको असेस करके उसके साथ एंगेज कर पाते हो. समझ में, इसका एग्जाम्पल जब हम इसको करेंगे तो उस पर डिस्कशन में आएगा. अगर सिचुएशन से विड्रॉ होते हो, इट इंडिकेट्स विड्रॉल और अवॉइडेंस बिहेवियर. मतलब एक सिचुएशन है जिसमें स्ट्रेस दे रहा है, उसको हैंडल करने की जगह आप उससे पीछे हट जाते हो, सो आप फ्लाइट मोड में जा रहे हो बजाय कि फाइट, है ना. सो विड्रॉल will have consequences. Realistic, appropriate and detailed responses is what is expected. Realistic मतलब यथार्थ में जो संभव है, उस परिस्थिति के अनुसार जो संभव है और जो अपेक्षा है एक मिलिट्री पोटेंशियल मिलिट्री ऑफिसर. Appropriate to the situation, not fantasy. Appropriate to the situation and response fairly detailed, जिसमें कि पता चले कि आप क्या कहना चाहते हो. ये नहीं कि बहुत ही क्रिप्टिक कर दिया कि समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाहते हो, है ना. प्री मोटर एंड स्केची रेस्पॉन्सेज रिफ्लेक्ट नेगेटिव ट्रेंड्स. नाउ व्हाट इज प्री मोटर, व्हाट इज स्केचिंग, ये हम आपके रेस्पॉन्सेज को देख के उसके डिस्कशन के हिस्से में इसको करेंगे. सो प्री मोटर एंड स्केची रेस्पॉन्सेज. स्केची मतलब एक एम्बिगुअस रेस्पॉन्स, समझ में नहीं आ रहा क्या है, वो नहीं चलेगा. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आगे बताऊंगा. नेक्स्ट इज
testify the finding of TAT and WAT. Since it is a confirmatory test, so many of the responses in the SRT acts as a or serves as a confirmation to what has been observed in the TAT and WAT. If it is a पॉजिटिव कंफर्मेशन, आपके पॉसिबिलिटी ऑफ रिकमेंडेशन इंक्रीज होगा. अगर आपके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स का कंफर्मेशन हो रहा है तो आपका रिकमेंड होना मुश्किल हो जाएगा. वी विल सी थ्रू एग्जांपल्स जहाँ पे हम आपके WAT, TAT और SD में जो लिखा है उसको हम इन रिस्पॉन्सेज के साथ SRT रिस्पॉन्स के साथ कोरिलेट करेंगे और देखेंगे कि आप क्लेम क्या कर रहे हो और हो क्या रहा है. विल सी, राइट. नेगेटिव फाइंडिंग्स आर गिवन मोर एम्फेसिस. अगर SRT, WAT वगैरह में फेवरेबल रिस्पॉन्स तो चलो अच्छी बात है, अनफेवरेबल रिस्पॉन्सेज आ गया उसको वेटेज लिया जाता है ज़्यादा, बिकॉज ये कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, इट्स नॉट सब कॉन्शियस. तो नेगेटिव रिस्पॉन्सेज का एम्फेसिस बहुत ज़्यादा होगा. इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे. यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ को एग्जाम्पल कोई सी भी चीज़ को समझाऊंगा नहीं. विल टेक इट थ्रू योर रिस्पॉन्सेज एंड देयर वी विल डिस्कस, है ना. नाउ इसके बेस में टाइप्स ऑफ एक्शंस ऑन सिचुएशन, किस तरह के एक्शंस कैंडिडेट लेते हैं जनरली. वन इज ही अटैक्स द सिचुएशन, मतलब ही हेड्स ऑन टेक्स इट, ही स्ट्रगल्स टू डील विद द सिचुएशन, ही कॉम्प्रोमाइजेस द सिचुएशन, ही विथड्रॉज एंड डज नॉट एंगेज विद द सिचुएशन, ही अवॉइड्स कंप्लीटली एंड डज नॉट इवन अंडरस्टैंड. सो द लास्ट केसेस उसका IQ इतना लो है, उसका ग्रास्प इतना लो है, उसका कम्युनिकेशन या इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग इतना लो है, वो समझ में नहीं आता. तो दैट्स अ वेरी ऑकवर्ड केस. इनके आधार में यू कैन एक्चुअली क्लासिफाई दी SRT रेस्पॉन्सेज. और SRT के रेस्पॉन्सेज जैसे WAT के भी रेस्पॉन्सेज देखे थे, 7 रेस्पॉन्सेज जिसमें फर्स्ट 6 नहीं चाहिए, ओनली द लास्ट वन विच इज ऑब्जर्वेशनल वो चाहिए. सिमिलरली यहाँ पे भी SRT के क्लासिफिकेशन है. पहला ब्लैंक, खाली ही छोड़ दिया. इर्रेशनल रेस्पॉन्सेज, इर्रेशनल मतलब उसका कोई तुक ही नहीं है, बेद सिर पैर का, तो नेचुरली वो आपका लो IQ को दिखाता है एंड पुअर कॉम्प्रिहेंशन को दिखाता है और लगता है कि बस आप कुछ भी लिख रहे हो बिना समझे. इनकम्प्लीट रेस्पॉन्सेज या इनहेबिटेड रेस्पॉन्स, जहाँ पे क्या कहना चाहते हो पूरा नहीं है. फैंटेसी रेस्पॉन्स, हवा में, फैंटेसी मतलब कल्पना में लिख दिया, उससे कोई वास्तविकता से मतलब नहीं है. प्री मोटर हमने पहले भी मेंशन किया था, वो नहीं चलेगा. एक ही रेस्पॉन्स चाहिए, मोटर रेस्पॉन्स, विच इज अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन, मैच्योरिटी, एज एंड इंटेलिजेंस, एंड इट इज इन एडिक्वेट डिटेल टू एक्सप्रेस क्या करना चाहते हो एंड इट इज रियलिस्टिकली पॉसिबल. सो दैट वाज मोटर रिस्पॉन्स के बारे में डिटेल में आगे आपके रेस्पॉन्सेस के बाद बताएंगे. सो इफ़ यू रेडी, आप एक A4 साइज पेपर ले लो, 2-3, उसमें 1 से लेके 60 तक मार्क कर लो and I'll present you one after the other 60 situations, and they in actual it will be given to you in the form of a PDF document, in the form of a hard copy, और आपको उसको देख के आपको response लिखना होता है साइड डोजियर में. बट यहाँ पे I'll present it. 30 minutes are given to you to complete all the 60 situation. यहाँ पे मैं 30 की जगह में 32 seconds में each SRT को फिक्स किया हुआ है. तो 32 सेकेंड्स में हर एक स्लाइड चेंज होता रहेगा, सो थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा. इंसिडेंटली आपको यही स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा SSB में भी, बिकॉज आपके पास घड़ी होता नहीं है, सीधा टाइम दे दिया होता है और आपको हाफ एन आवर में 30 सिचुएशन करना है. तो एवरेज पर सिचुएशन 30 सेकेंड्स का आएगा. तो मैंने यहाँ पे 32 सेकेंड्स दिया हुआ है. सो इफ़ यू रेडी, आई विल शो यू दी रिस्पॉन्सेज. सो बी रेडी, पेन वगैरह रख लो, and no breaks between the site. So before we put you through the test, let me give you that AFOSOP का 4 weeks का online composite batch which consists of both SML, self management leadership, and the SSB classes are available. Fresh batch starts every Monday. अगला बैच जो है मंडे से शुरू होने वाला, आने वाला मंडे, कल संडे उसके बाद से. एंड इसके लिए रजिस्टर करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9090099035, and you can WhatsApp me. I'll share you the details. Also you can share with the friends. Fresh batch starts every Monday. 500% clarity. The minimum duration is 4 weeks, but in case you feel, you can extend it to 8 weeks and 12 weeks. Service center के लिए I'll suggest you, आप लोग 4 weeks आपके लिए कम पड़ जाएगा. 8/12 को ऑप्ट करना है. एनीवे इवन इफ ऑफ फॉर 4 weeks यू कैन एक्सटेंड इट, बट आई सजेस्ट यू, जिन लोगों का लैंग्वेज कंट्रोल नहीं है, जिन लोगों का करंट अफेयर्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, आपके लिए 4 weeks कम पड़ जाएगा. सजेस्ट टू गो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन बिकॉज दोज थिंग्स विल बी कवर्ड. उसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी होता है एंड क्लासेस भी होगा. सो ऑप्ट accordingly. Even if you choose for 4 weeks, which is the minimum duration, it can be extended. इसके अलावा जो लोग full psychological test assessment चाहते हैं, पूरा को पूरा 1-on-1, that is also available, जहाँ पे आपके पूरे के पूरे 12 TAT, WAT, SRT and SD
will be not only analyzed, will be correlated with each of these tests to check for congruence. And all the tests will be video recorded for you, and it will be वन ऑन वन डिस्कशन. सो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो. इसके अलावा ऑनलाइन वन ऑन वन पर्सनल इंटरव्यू विल ऑल्सो बी possible, and it will be on Zoom, and in-depth feedback will be given, and the video recording of the same will be provided. So that also option is there, and otherwise anyway 4 weeks का class तो है ये. उसके अलावा every Saturday we have free demo class. So those of you who want to have a feel of the class, you're most welcome to join the free demo class every Saturday. That happens from 9 p.m. onwards, and you can contact me on the same number and I'll get back to you. इसी तरीके से हर दिन 8:15 से 9:15 तक ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, पब्लिक स्पीकिंग, करंट अफेयर्स के क्लासेस चलते हैं, जो कि अभी तक रेगुलर क्लासेस के लिए, बट आई एम कंसिडरिंग इट ओपनिंग फॉर एवरीबडी. सो दोस्त हु इंटरेस्टेड, जस्ट सेंड मी मैसेज on WhatsApp and I'll include you in that group so that you can join me there and you can be part of that group, so that आपका communication skill and content building develop हो जाएगा. And these classes are free, so just WhatsApp me on this number and I'll put you into the क्या बोलते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में. इसके अलावा जो डिस्कशन का टॉपिक होगा उसको AFOSOP के टेलीग्राम चैनल में एक दिन पहले डाल दिया जाएगा, सो दैट यू नो व्हाट topic will be discussed. You can prepare accordingly. So all those things you can contact me and I'll share you the details. So now let's come back to the इसके अलावा जिन लोगों ने AFOSOP के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, do share it. You will find a lot of good videos there, very clear videos there. 450 plus videos are there. Do subscribe them, like them, put your comments and share with your friends so that others also benefit. So let's come back to the SRT test. So if you're all ready, we will start the test, right? Okay.
Okay, so that's end of the test. Convert this entire SRT responses into one single PDF and send me on this number 9090099035. And whenever you come for the demo classes, if possible, we'll try to, discuss these things. And anyway, if you take the regular classes also, वहाँ पे भी ये डिस्कशन होगा ही होगा. एंड मुझे एक चीज़ बताना कि आप लोगों को समझ में आया, इसको इसी में कमेंट लिख के बताना इसको करते ना क्या प्रॉब्लम आया. वे लुकिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स. और हमने स्पीड ऑफ डिसीजन का डेफिनेशन ऑलरेडी देख लिया था. अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिसीजन अराइव्ड एट एंड क्विकनेस इन अराइविंग एट द डिसीजन. और आपको लगा होगा कि एसआरटी का जिस स्पीड से हो रहा था कि इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस एंड ब्रेन को ट्रेन करने की ज़रूरत है. सो जरूर कमेंट लिख के बताना. सो वंस अगेन, fresh 4 weeks AFOSOP composite batch consisting of self-management, leadership and SSB starts every Monday. 4 weeks का duration है. And to register, you have to contact me on this number. Do share it with the friends. Thank you and may God bless you. Thank you very much.